Now we have seen the alpha blockers. Now beta blockers. Beta blockers. So what will they do? They will block the beta receptor. Beta receptor of your adrenergic nervous system. तो आपको पहले मालूम होना चाहिए बीटा रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे होता है. So there are three: beta 1, beta 2, beta 3. So beta 1 is present in the heart. Beta 1 कहाँ पे होता है? हार्ट में होता है. Also present in the kidney. Beta 1 is there in the heart and kidney. Okay. Beta 2 कहाँ पे होता है? Smooth muscles of your bronchi. Bronchi में होता है, lungs में ना. Lungs में नहीं बोल सकते, bronchi में. यहाँ पे PP हो जाएगा इसलिए ये लिखता हूँ, ये मतलब lungs. So B2 is present in the bronchi, smooth muscle of bronchi. So beta 1 का रोल क्या है? Normally stimulation of beta 1 by noradrenaline will increase the cardiac output, will increase the heart rate, will increase the blood pressure. Okay? Stimulation of beta 1 in the kidney, okay, that results in the release of renin. Beta 1 का stimulation kidney में हो गया तो release करेगा क्या? Renin enzyme. So renin बाद में सब कार्यक्रम चलोगा. रेनिन एक्टिवेशन ऑफ एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1, 1 to 2, 2 to 3, 2 अपना काम कार्यक्रम कर देगा, वो देखेंगे. तो बीटा 1 इज प्रेजेंट इन द हार्ट एंड किडनी. ओके. बीटा 2 ब्रोंकियल स्मूथ मसल, बीटा 2 ब्रोंकियल स्मूथ मसल. बीटा 3 एडिपोज टिश्यू, है ना. बीटा 2 स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर बाय एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन कॉजेज द ब्रोंको डायलेशन. देखो बीटा 2 रिसेप्टर क्या करता है? ब्रोंको डायलेशन करता है. वन इज प्रेजेंट इन द हार्ट, सेकंड इज प्रेजेंट इन द ब्रोंकाई, थर्ड इज प्रेजेंट इन द adipose tissue. Beta 1 responsible for the blood pressure and hypertension, responsible for the renin release. बीटा रिसेप्टर का अपन देख रही है. So beta 1, beta 2, beta 3. So beta 1 stimulation by noradrenaline results in the hypertension, blood pressure increase होगा, cardiac output increase होगा, heart rate increase होगा. Also beta 1 stimulation in the kidney releases the renin, which also contribute the increase in the blood pressure. Beta 2 stimulation by noradrenaline, because noradrenaline क्या है? उसका agonist है. So noradrenaline result in the bronchodilation, है ना. Bronchodilation because of the beta 2 stimulation in the bronchial smooth muscle. So that's why adrenaline, noradrenaline, they are useful in the asthma, bronchodilator. Beta 3 stimulation is in the lipolysis. Beta 3 का आपको ज़्यादा रोल नहीं है. So hypolipidemic drug के लिए एक target है. So now, so you know that beta 1 is in a heart, responsible for the increase in the blood pressure and okay, cardiac output. Beta 2 is present in the bronchial smooth muscle, responsible for the bronchodilation. अभी बीटा ब्लॉकर्स में टाइप आता है नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स विद द सिंपैथेटिक एक्टिविटी, बीटा ब्लॉकर्स विद द इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी, बीटा ब्लॉकर्स विद द वेसोडाइलेटर प्रॉपर्टी, बीटा ब्लॉकर्स विद द बीटा ब्लॉकर विद द एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी. अभी देखो अगर आपने सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दिया, सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर मतलब कार्डियो सिलेक्टिव, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दिया तो वो क्या करेगा? सिर्फ हार्ट में ही जाके बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा. सो इट विल डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट. ओके. बट अगर नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे दिया है ना, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे दिया, नॉन सिलेक्टिव मतलब क्या है? तो नॉन सिलेक्टिव मतलब ये बीटा 1 को भी ब्लॉक करेगा, बीटा 2 को भी ब्लॉक करेगा. So if non-selective beta blockers are given, so it will block the beta 1 receptor in the heart. Definitely, it will decrease the blood pressure, cardiac output. No doubt, it is useful. But it will also block this beta 2 receptor. अगर beta 2 को ब्लॉक किया तो यहाँ पे क्या होगा? ब्रोंको क्या होगा? Yes, anybody? यहाँ पे क्या होगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन डायलेशन क्या होगा? नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है. Am I audible to you? Audible आएगा? ओके. सो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर अगर आपने दे दिया जो बीटा 1 को भी ब्लॉक करेगा, बीटा 2 को भी ब्लॉक करेगा. बीटा 1 को ब्लॉक करना इट इज अ रिक्वायर्ड क्योंकि ब्लड प्रेशर है आपको, यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर. सो बीटा 1 ब्लॉकिंग दैट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. बट एज इट इज अ नॉन सिलेक्टिव इट विल आल्सो ब्लॉक द बीटा 2. बीटा 2 को ब्लॉक किया तो क्या हो सकता है? नॉर्मली अगर एगोनिस्ट बीटा को स्टिमुलेट करता है तो ब्रोंकोडाइलेशन होता है. बीटा 2 को अगर ब्लॉक करेगा तो क्या होगा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, है ना. यस और नो? बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो क्या होगा?
ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगा या नहीं, यस और नो, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो बीटा टू रिसेप्टर कॉजेज, आप रिएक्ट करो, थोड़ा सा बोलते जाओ आप, नहीं तो क्या होता है मैं ही कीर्तन बोल रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए क्या चल रहा है। सो बीटा वन ब्लॉकिंग दैट डिक्रीजेस द blood pressure, that decreases the force of contraction, that decreases the heart rate, that is the desired one in case of hypertension। बट अगर उसने बीटा टू को ब्लॉक किया तो क्या होगा, वहां पे होगा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, एंड वेदर इट इज डिजायर्ड और नॉट, इट इज नॉट डिजायर्ड। अगर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा मतलब आपको अस्थमा हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स लाइक प्रोप्रानोल, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स लाइक प्रोप्रानोल, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ अस्थमा है ना। तो आपको समझ के पढ़ना है कि ऐसा है, टाइम पास करके नहीं पढ़ना है। ओके, सो बीटा ब्लॉकर्स, so we have already seen beta blockers pharmacology in the sympathetic nervous system, sympathetic, but only anti-hypertensive property will be discussed over here. So anti-hypertensive effect of beta blockers, that is due to blocking of beta receptor and lowering of peripheral resistance, lowering of cardiac output. Also in case of chronic administration there is a decrease in the cardiac output and renin release। तो ये क्या है, बीटा ब्लॉकर्स क्या है, बीटा ब्लॉकर्स के एक्शन क्या है, फर्स्ट it will decrease the cardiac output, it will decrease the cardiac output, it will decrease the heart rate, it will decrease the blood pressure, also it will decrease the peripheral resistance। तो आप बोलेंगे सर पेरिफेरल रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज करता है, सी बीटा ब्लॉकर्स, there are three receptors, beta 1, beta 2, beta 3। beta 1 is present in the heart, beta 2 is present in the smooth muscles of bronchi, beta 2 is also present in the smooth muscles of larger blood vessels, larger blood vessel। beta 1 क्या है, स्टिमुलेटरी इन नेचर होता है, beta 2 क्या है, इनहिबिटरी, beta 2 इनहिबिटरी होता है, तो beta 2 रिलैक्सेशन करता है लंग्स में भी, आपका ब्रोंका में भी और ब्लड वेसल में भी। ब्लड वेसल में रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा, so blood vessel if they are relaxed then definitely your peripheral resistance will decrease, cardiac output decreases करता है, they will decrease cardiac output, they will decrease peripheral resistance, also they will decrease the blood pressure because of this, also they will decrease the renin release। बीटा ब्लॉकर्स क्या है भाई, रेनिन एंटागोनिस्ट भी है, रेनिन को सिक्रेट नहीं होना, they reduce the blood pressure in a hypertensive patient, both systolic as well as diastolic blood pressure is decreased in both positions, supine as well as standing position, they do not cause tachycardia as that is caused by versatile tachycardia करते हैं, reflex tachycardia, but beta blockers नहीं करते। Sudden withdrawal of beta blockers can result in the dangerous tachycardia and rebound rise in the blood pressure as well as angina pectoris। बीटा ब्लॉकर सडनली आप विड्रॉ करेंगे, अगर कोई पेशेंट है उसको बीटा ब्लॉकर का ट्रीटमेंट चालू है, सडन विड्रॉल ऑफ बीटा ब्लॉकर्स that result in the dangerous tachycardia, rebound rise in the blood pressure and angina pectoris। Am I audible to you properly? ऑडिबल आएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, किस में यूज नहीं करना है, सो इंक्लूड्स कार्डियक एंड pulmonary and peripheral vascular disease, they are contraindicated in case of asthma also, asthma में non selective beta blocker they are contraindicated। all these drug can result in the sodium and water retention, hence diuretic are combined with them। so beta blocker they are not used alone in treatment of hypertension, they are always given with the diuretics। why, because these beta blockers can cause sodium water retention, वाटर और सोडियम रिटेंशन को इंक्रीज करता है, तो ये इंक्रीज होगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, दैट्स व्हाई डायरेटिक्स आर कंबाइंड विद द बीटा ब्लॉकर्स। सो बीटा ब्लॉकर्स का क्या एक्शन है, बीटा ब्लॉकर्स, व्हाट इज द एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स फॉर हाइपरटेंशन। so in the heart first they will exert action in a three way, first it will block the beta 1 receptor in the heart, what will happen, so blockage of beta 1 activity in the heart, that decreases the heart rate and force of contraction, which decreases the cardiac output, and you know that after decreasing the cardiac output blood pressure will also decrease, okay? Now in the kidney they block the beta 1 receptor and they will decrease the renin release, रेनिन कम हो गया, रेनिन रिलीज नहीं हुआ,
तो एंजियोटेंसिन एक बनेगा नहीं, एंजियोटेंसिन बनेगा नहीं. So there is no formation of angiotensin 1 second. Okay. Decrease in the angiotensin 1 and second formation also decreases the aldosterone secretion. Okay, and therefore decreases in the sodium and water retention, decrease in the blood volume, decrease in the cardiac output. That's why decrease in the blood pressure. Cardiac output decrease हो गया, blood pressure decrease हो जाएगा. Again, beta blockers in the brain, in the presynaptic neuron, blocking of beta receptor in the presynaptic neuron, so that decreases the sympathetic activity. सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो गया मतलब वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, मतलब क्या होगा, वैसोडाइलेशन. That decreases the peripheral resistance. You know that anything that will decrease the peripheral resistance and cardiac output will decrease the blood pressure. So that's how beta blockers they will act. समझ में आया क्या बीटा ब्लॉकर्स का एक्शन? Yes or no? Next is the vasodilators. Vasodilators क्या करेंगे? What vasodilators will do? So vasodilators they will dilate the blood vessel. They will dilate the blood vessel. Now blood vessel are of two type. तुम्हाला माहिती आहे ब्लड वेसल दोन प्रकारचे असतात. कौन से? एक होता है आर्टरी है ना, एक होता है आर्टरी, arteries and veins. So some drugs they will dilate only arteries, known as arteriolar dilator. Some drugs will dilate only veins, known as venodilators. Some drug will dilate both arteries plus vein, known as arterio plus venodilator. So arteriolar dilator कौन है? Arteries can be dilated by a different way, by direct action. Second, by blocking the sodium ion channel, by blocking the calcium ion channel, by opening the potassium ion channel. So arteries can be or blood vessels can be dilated by, it can be dilated by different way. क्या कर सकते हैं? एक तो by production of nitric acid, nitric oxide. So those drug which increases the production of nitric oxide, इसको क्या बोलते हैं अपन? एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर. कि ये कहाँ पे बनता है? Endothelium of your blood vessel, inner layer of blood vessel will produce the nitric oxide, which helps to dilate the blood vessel. So blood vessel can be dilated by increase in the amount of nitric oxide. Second, blood vessel can be dilated by blocking the calcium ion channel. Calcium ion channel block करो, क्योंकि calcium क्या करता है? Calcium अंदर जाके depolarization करता है और blood vessel को constrict करता है. तो इसको इनबिट करेंगे तो वैसोडाइलेशन होगा. थर्ड, सोडियम को ब्लॉक करो, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स. बट सोडियम चैनल का बहुत ही कम रोल होता है इसमें. यू कैन ब्लॉक द सोडियम चैनल्स इन द आर्टरी, इन द ब्लड वेसल्स. ये सब ब्लड वेसल का है. देन फोर, कैन आल्सो ओपन द, यहाँ पे ओपन पोटेशियम आयन चैनल्स. यू कैन ओपन द पोटेशियम आयन चैनल्स. सो vasodilators they act by this way. So they will either produce a nitric oxide, or they will either block the calcium ion channel, or they will either block the sodium ion channel, or they will open the potassium ion channels. So all vasodilators they act by this way. Okay, ये इनका normal mechanism है. So पहला है arteriolar dilator. कौन सा example? Arteriolar dilators, artemisinin, then minoxidil, then diazoxide, and then calcium channel blockers. So they are the arteriolar dilators. Venodilator कौन है भाई? Venodilator होता है आपका organic nitrates. Organic nitrates are the venodilator. Then आपका arterio plus venodilator कौन होता है? Sodium nitrophospate. ये अपन ने क्लासिफिकेशन में देखा है ऑलरेडी. You have to recall. Okay. Adrenaline क्या है? It is the arteriolar dilator. It decreases the blood pressure by decreasing the total peripheral resistance. Okay. By compensatory tachycardia, decrease in the stroke volume and cardiac output. It can cause increase in the plasma renin activity. ये renin को बढ़ाता है and can cause fluid. Adrenaline क्या है? It is a drug which is metabolized by acetylation reaction. ये मेटाबोलाइज होता है आपका acetylation reaction. याद रखना है acetylation से कौन कौन मेटाबोलाइज होता है? हाइड्रोलाइजिन मेटाबोलाइज होता है, सल्फोनामाइड्स मेटाबोलाइज होते हैं. उसके बाद आइसोनियाजाइड ड्रग जो है आपका इसका टीपी का, वो भी मेटाबोलाइज होता है. सो स्लो एस्टाइलेटर्स, फास्ट एस्टाइलेटर्स, स्लो एस्टाइलेटर्स एंड रैपिड एस्टाइलेटर्स.
So they has a different capacity to metabolize the hydrolyzing. Okay, remember, ये क्या करता है? It will produce a nitric oxide. It will produce a nitric oxide and it will dilate the blood vessel. Adverse drug reaction क्या है इसके? GIT इफेक्ट. GIT में क्या होता है आपको मालूम होता है? नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया. बाकी कुछ आए ना आए, ये तीन एडवर्स इफेक्ट आपका बर्थ राइट है ना, है ना. हमको बाकी कुछ आए ना आए, तीन एडवर्स इफेक्ट हम सेमेस्टर एग्जाम में 100% लिखेंगे, है ना. ये हमारा जन्म से दायित्व कर रहा है, नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया. तो जीआईटी में नोशिया, वोमिटिंग करेगा, गैस्ट्रिक हाइपो सिक्रेशन करेगा, एनोरेक्सिया, भूख न लगना, डायरिया, कार्डियक इफेक्ट क्या है? पाल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, एंजाइनल अटैक. अदर एडवर्स इफेक्ट लाइक हेडेक, nasal congestion, flushing, tremors and dizziness. In large doses and chronic use of these vasodilators leads to syndrome which is resembling to the acute rheumatoid arthritis. Then disseminated lupus erythematosus. तो ये भी एडवर्स इफेक्ट है उसका. क्या है एडवर्स इफेक्ट? याद रखना है आपको. आर्थराइटिस लाइक सिंड्रोम, disseminated lupus erythematosus. Hydrolyzing is metabolized by acetylation reaction, मैंने बोला था आपको. It is given way. So it is effect, okay. It is metabolized by acetylation and its effect is genetically determined whether fast acylated. Okay. So you should adjust the dose in case of slow acetylators and fast acetylators. It is used as an arteriolar dilator in management of congestive heart failure, है ना. आपको हो गया हाइड्रोलाइजन. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रोपोसाइड. सोडियम नाइट्रोपोसाइड ये क्या है? इज आर्टरियो प्लस वेनो डायलेटर. आर्टरियो प्लस वेनो क्या है? सोडियम नाइट्रोपोसाइड. इट इज यूज्ड एज अ कलर इंडिकेटर फॉर एसीटोन एंड एल्डिहाइड. किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड है या फिर एसीटोन है, कीटोन है, देखने के लिए सोडियम नाइट्रोपोसाइड क्या करते हैं? एज अ कलर इंडिकेटर. It is also a poison. It is regarded as a poison because of its cyanide group. It is regarded as a poison because of the cyanide group. Sodium nitroposide में cyanide group होता है and it is regarded as a poison. So if you want to use sodium nitroposide, you have to prepare a fresh solution. Fresh solution बनाएंगे तो cyanide का उसमें कम amount होता है, poison नहीं act होगा. अगर ज़्यादा time से मतलब if you are using pre-prepared solution that will poison you. It is metabolized to nitric oxide. Nitric oxide बनता है in the blood vessel. Vasodilation result in the reduction of peripheral resistance and venous tone, reducing the afterload as well as preload respectively. Only fresh solution prepared way. Only freshly prepared solution is used because it is a light sensitive, and when exposed to light, the drug get converted into cyanide. फ्रेश सोल्यूशन बना के ही आपको यूज करना है इसका, नहीं तो यूज नहीं करना है. इंटू साइनाइड. अगर साइनाइड ले लेंगे तो साइनाइड पॉइजनिंग हुआ. पता चला कि आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आपने सोडियम नाइट्रोपोसाइड यूज किया और आपका विकेट गिर गया. क्यों? क्योंकि साइनाइड पॉइजनिंग हुआ. क्यों? क्योंकि आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन नहीं है ना. आर यू गेटिंग और नॉट? एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? जो भी वैसोडाइलेटर है वो क्या करेंगे? ब्लड प्रेशर कम करेंगे. कैसे? by dilating the blood vessel, by decreasing the peripheral resistance. But blood vessel dilate किया है ना, तो क्या होगा? क्या कि जो वेनस रिटर्न है आपका वो हार्ट में क्या आएगा? कम आएगा, है ना. ब्लड वेसल डायलेट किया मतलब ब्लड वेसल में ही ब्लड रहेगा, अंदर कम आएगा हार्ट में. तो आफ्टर लोड एंड प्री लोड क्या होगा? कम होगा. हार्ट के ऊपर प्री लोड मतलब क्या? सो वट एवर ब्लड इज प्रेजेंट इन द आर्टरिया, है ना, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी राइट एट्रियम, तो ब्लड आ रहा है बॉडी से राइट एट्रियम में, वो कम हो रहा है. तो डिक्रीजेस द प्री लोड, है ना. और वो ब्लड एट्रियम में ही कम आ रहा है तो वेंट्रिकल में कम आएगा, वेंट्रिकल से जाने वाला ब्लड कम रहेगा. सो आल्सो डिक्रीजेस द आफ्टर लोड. प्री लोड एंड आफ्टर लोड both are decreased by vasodilator, and that's why they are also useful in the angina pectoris. High dose, okay, they decreases the प्रीलोड आफ्टर लोड, तो उसमें सिंकोप भी हो सकता है
and they also can cause reflex tachycardia. अगर आपको ब्लड इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ है, आपका कार्डियक आउटपुट कम हुआ है, ब्लड कम आ रहा है तो कार्डियक आउटपुट कम हुआ, तो हार्ट क्या करेगा, जोर जोर से धड़केगा. दैट्स व्हाई रिफ्लेक्स tachycardia. Now high dose of this drug result in the renal efficiency tends to precipitate the isothiocyanate toxicity, also causes the hepatic dysfunction and may result in the toxic cyanide because of the toxic cyanide. अगर इसका सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का हाई डोज ले लिया या फिर कोई आपको रिनल एफिशिएंसी है, मतलब किडनी में दिक्कत है, दैट टेंड्स टू प्रेसिपिटेट आइसोथायोसाइनेट टॉक्सिसिटी. मतलब क्या है कि अगर आपने हाई डोज ले लिया है इसका सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का, if you are using high dose of sodium nitroxide or if you are suffering from renal insufficiency, kidney में कोई दिक्कत है, so that increases the isothiocyanate toxicity, hepatic dysfunction that may result because of the toxic cyanide. Sodium nitroprusside is used in the emergency treatment of hypertension, also used to produce the controlled hypotension during the surgery, myocardial infarction, and used to improve the left ventricular failure. याद रखना है. What will sodium nitroprusside will do? Sodium nitroprusside will produce the nitric oxide. क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगा, मेटाबोलाइज होता है उसका. तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आफ्टर मेटाबॉलिज्म will release the nitric oxide. What nitric oxide will do? It will stimulate the guanylyl cyclase enzyme. Guanylyl cyclase enzyme. I know. What is the role of this? It will convert GTP into cyclic GNP. Yeah. Guanine phosphate को cyclic guanosine monophosphate. Guanosine triphosphate GTP is converted to cyclic GMP, guanosine monophosphate, and increasing the cyclic GMP in the cell result in the vasodilation, blood vessel में. vasodilation होगा तो blood pressure क्या होगा, आपका vasodilation होगा तो peripheral resistance कम होगा, blood pressure भी कम होगा. That's how sodium nitroprusside will act. You can see over here again. Sodium nitroprusside will stimulate the guanyl cyclase enzyme. After releasing nitric oxide, sodium nitroprusside से nitric oxide बनेगा, that will stimulate the guanyl cyclase, that will that will decrease नहीं है, increase होना चाहिए, that will increase the cyclic GMP and relaxation of smooth muscles of blood vessel, dilation of arteries and veins, decreasing the peripheral resistance, and lastly blood pressure. Vasodilators क्या करते हैं? Vasodilators they will decrease or they will relax the smooth muscles of blood vessel, and they will dilate the blood vessel, they will decrease the peripheral vascular resistance, and decrease the blood pressure. Decrease in the blood pressure is counteracted by your body. Blood pressure कम होगा तो blood body try करती है बढ़ने का, body will cause tachycardia. So that's why all vasodilators will produce reflex tachycardia as adverse effect, and also they will cause sodium and water retention. क्यों करेगा? Body will try to increase the blood volume also by retention of sodium and water. तो जो भी vasodilators होते हैं उनके ये adverse effect होते हैं. कौन से? Sodium, water retention, reflex tachycardia. Are you getting or not? Okay, समझ रहा है? Next है आपका calcium channel blockers. Calcium channel blockers, CCB. So this drug we are going to discuss in the detail in the angina pectoris. Okay. So what they will do, because so in that you are going to have verapamil, diltiazem, then आपका dihydropyrimidines. In that you are going to have nifedipine, amlodipine, nicardipine, ninglodipine, etc., etc. So nifedipine is used in the management of hypertension in emergency. Dipines, whatever dipines are there, dihydropyrimidines, they are known as peripherally acting calcium channel blockers. क्या होता है कि verapamil, diltiazem, they block calcium channel centrally as well as peripherally. मतलब क्या कि सेंट्रल मतलब ब्रेन नहीं,
Calcium channel blockers, they will block the calcium channel of your heart also in the myocardium and blood vessels. But जो hyperpyrimidines होता है, they will block the calcium channel in the blood vessels only. That's why dihydropyrimidines, dapines, they are known as a peripherally acting calcium channel blockers. So nimlodipine, it also block the calcium channel in the cerebral blood vessel. So nimlodipine जो होता है, it is a cerebroselective vasodilator and used to reverse the vasoconstriction after subarachnoid hemorrhage. Clevidipine is ultra short acting dihydropyrimidine. Clevidipine is ultra short acting dihydropyrimidine, recently approved for hypertensive. Now, potassium channel activator, potassium channel activator और potassium channel opener. इसमें क्या है? Diazoxide, minoxidil, nicorandil, phenazidil. These are the drug combined with the ATP modulated potassium channels. They will bind with the ATP modulated potassium channels and they open it. By opening it, they cause potassium to leak outside from the cell and hyperpolarize the cell membrane. That's why there is a blood vessel dilation. So there is a relaxation. इनका mechanism समझ में आ रहा है क्या आपको? Potassium channel opener. What will they do? They will open the potassium ion channel. For example, diazoxide, minoxidil, nicorandil, phenazidil. So they will open the potassium ion channel of cardiac cell, potassium ion channel of blood vessel, and that result in the hyperpolarization and result in the dilation of blood vessel. So minoxidil is oral vasodilator. It is the most potent and least toxic than diazoxide. Minoxidil. तो minoxidil क्या है? It is a again potassium channel opener, which is a potent. ये potent होता है, less toxic होता है ना? Minoxidil. Minoxidil. इसका एक adverse effect होता है minoxidil का. Anybody? What is the adverse effect of minoxidil? Minoxidil का एक adverse effect होता है, उसको बोलते हैं अपन hypertrichosis. Hypertrichosis होता है, इसका adverse effect hypertrichosis है ना. Hypertrichosis मतलब क्या है? ये बहुत ही ज्यादा क्या करेगा? हेयर का प्रोडक्शन करेगा. Hypertrichosis means increase in the production of hair, increase in the growth of hair. It will cause virilization of the female face. जो अगर लड़की है उसने ये minoxidil यूज किया, उसकी दाढ़ी मूंछ आ जाएंगी. So it causes the stimulation of hair growth, hypertrichosis. So minoxidil, okay, is a prodrug. It is a prodrug. It is activated. It is converted into minoxidil sulfate. Minoxidil sulfate, which is a active metabolite. Now this metabolite opens the potassium ion channel and also opens the potassium ion channel in the hair follicle and causes the hypertrichosis, increase in the hair growth. That's why minoxidil is used in the treatment of alopecia. Alopecia मतलब क्या? टकला. To promote the hair growth, acts by increasing the microcirculation and direct stimulation of hair follicle and alteration of also androgenic. It can cause hirsutism. Hirsutism मतलब क्या? Hirsutism in the females मतलब जैसे आपका लेडीज का दाढ़ी मूंछ नहीं होता है, लेकिन ये लेडीज को अगर दाढ़ी मूंछ बनाना है तो इसका सॉल्यूशन लगा दो. Hirsutism in the females. Basically, it is a vasodilator. Diazoxides, nicorandil, phenazidil. Nicorandil and phenazidil, they are used mostly. Diazoxide is also. But minoxidil is less likely to be used for hypertension. It is mostly used in the treatment of alopecia. तो nicorandil, phenazidil, diazoxide ये hypertension के लिए यूज करते हैं, ये minoxidil alopecia के लिए यूज करते हैं. Are you getting or not? समझ रहा है कि नहीं? देखो hirsutism in the females, तो hirsutism को ही अपन बोलेंगे hypertrichosis. हाइपर मतलब ज्यादा, ट्राइकोसिस मतलब हेयर ग्रोथ.
नहीं तो फिर कल से चलो करेंगे, ले लेंगे इसका सॉल्यूशन मिनरल का और लगा देंगे बालों को, बाल बढ़ेंगे. So calcium channel blockers. So what they will do? They will bind to L type of calcium channel in the heart as well as vascular smooth muscle. Smooth muscle of blood vessel ना. Vascular smooth muscle मतलब क्या है? VSM. Smooth muscles of blood vessel. Inhibit the passage of calcium through membrane channel. Okay? तो उनका इफेक्ट क्या होगा? देखो, ये किसको ब्लॉक करते हैं? ये हार्ट के कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करेंगे और वेस्कुलर स्मूथ मसल को भी ब्लॉक. अगर हार्ट के ब्लॉक किया तो क्या होगा? So verapamil, latiazem, they will block the, okay, they will block the calcium channel in the heart also. What will happen? So blockage of calcium channel in the heart, negative inotropic effect, negative chronotropic. हार्ट रेट कम होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, तो क्या कम होगा? हार्ट रेट कम होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, तो क्या कम होगा? ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट कम होगा. You know that BP is equal to कार्डियक आउटपुट into peripheral resistance. कार्डियक आउटपुट कम होगा तो peripheral BP कम होगा. On the vascular smooth muscle, they will cause relaxation of blood vessel that cause vasodilation and decreasing the peripheral resistance. That's why decreases the blood pressure. Calcium channel blocker क्या करेंगे? Calcium channel blocker heart rate को कम करेंगे, cardiac output को कम करेंगे, and also peripheral resistance को कम करेंगे, and that leads to decrease in the blood pressure. तो याद रखना है. Calcium channel blockers, okay? By acting on a heart, they will decrease the cardiac output. By acting on a blood vessel, they will decrease the peripheral resistance. That's why decreasing the pressure. Yes or no? Are you getting or no? ठीक है, समझ रहा है आपको? So remaining part we'll see in the afternoon. बाकी का part जो है ना वो afternoon में देख लेंगे. बाकी का part afternoon में देख लेंगे. You can join the lecture again at you can join a lecture at the